Now trick to remember oxyacids. Oxyacids are acids that contain hydrogen, oxygen and another one element. Here hydrogen and oxygen, and X means another element. That element may be a sulfur, nitrogen, phosphorus and chlorine. And this oxyacid they releases H plus ion in water. Okay. Now what is the OMP means order of water loss. First one is O for ortho, is the original acid and maximum number of water content. Meta, how meta is formed? In the origin from the original acid, if you remove one water molecule, then the meta form is formed. And how pyroform is formed? That is formed when you took two molecules of the acid and you remove one water molecule, then it is formed the pyroform. Now take one example. Suppose orthophosphoric acid. Actual formula of orthophosphoric acid is H3PO4. That is a normal acid and maximum number of water is present here. But what is the metaphosphoric acid? Now when from the orthophosphoric acid, if you remove one water molecule, see here if you remove one water molecule means H2, if you remove H2 चला जाएगा, another hydrogen is there and P जैसे ही जैसे रह जाएगा and oxygen से एक oxygen अगर चला गया 3 oxygen. So if you remove one water molecule from here, then the resulting compound is your HPO3, that is your metaphosphoric acid. Similarly pyrophosphoric acid, when you took जब आप लोगे 2 molecules of phosphoric acid, उसमें से एक water molecule हम remove करेंगे. 2 molecules of phosphoric acid मतलब आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 3 6, then ये हो जाएगा P2 एंड ये हो जाएगा O8. इसमें से अगर मैं 8 से होकर चला गया तो O7. सो H4P2O7, दिस इज योर फॉर्मूला pyrophosphoric acid. Okay. Now, oxyacids and their salts. Now, a simple pattern to remember is hypo, os, ec and por. कैसे इसे? Now, it is the order of oxygen atom increasing order. Okay. Now, see here. Hypo is the lowest oxygen content. Por is the highest oxygen content. Suppose the prefix is hypo or os. That is example अगर हम लेंगे hypochlorous acid. What is the formula of hypochlorous acid? HClO. Okay. And what is the radical from which it is formed is hypochlorite ion. Hypochlorite ion के साथ H plus ion जोड़ दो, बन जाएगा HClO. That is the formula of hypochlorous acid. And the Na plus ion combines with this, it will form NaClO. That is your sodium hypochlorite. This is the compound formed. Okay, the salt is formed. Similarly, second one is os. अच्छा मैंने बोला था hypo से os दबाएंगे एक ऑक्सीजन बढ़ेगा. So this is known as chlorous acid, right? os suffix os लग रहा है यहाँ पे, chlorous यहाँ पे hypo os था, यहाँ पे os. So जब os होगा जो भी है ऑक्सीजन इसमें एक इंक्रीज होगा. This is your HClO2, एक ऑक्सीजन इंक्रीज हुआ. And this is formed from chlorite ion. Chlorite ion formula is Cl2 minus. And the compound which is formed from this is your, if you will say this, the compound is your NaClO2. That is your sodium chloride. ठीक है, दर सॉल्ट फॉर्म लीजिए सोडियम क्लोराइड. ईक एसिड में नेक्स्ट क्या बोले और एक ऑक्सीजन बढ़ेगा. अगर इसका एग्जांपल लेते हैं, दिस इज योर क्लोरिक एसिड. ना एक ऑक्सीजन बढ़ेगा तो HClO3, दिस इज योर क्लोरिक एसिड. एंड व्हाट इज द सॉल्ट फॉर्म फ्रॉम व्हिच आयन इट इज फॉर्म? दिस इज योर क्लोरेट आयन, ATE, क्लोरेट. द फॉर्मूला इज Cl3 minus. एंड व्हाट विल बी द कंपाउंड फॉर्म और द सॉल्ट फॉर्म इफ अटैच्ड विद सोडियम, इट बिकम्स NaClO3. दैट इज योर सोडियम क्लोरेट आयन. सो ईक एसिड्स आर फॉर्म फ्रॉम ATE आयंस. ठीक है, और ATE रेडिकल्स. सिमिलर नेक्स्ट वन इज पर ईक एसिड्स. देखो पर क्लोरिक एसिड. सो अगेन एक ऑक्सीजन बढ़ेगा HClO4 एंड द आयन फ्रॉम व्हिच इट इज फॉर्म इज पर ATE, पर क्लोरेट आयन, Cl4 minus. एंड हियर आल्सो द कंपाउंड फॉर्म विल बी NClO4. सो दिस सोडियम पर क्लोरेट आयन.